नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया नॉलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आपण जदि आम चैनल को प्रथम आसन दयाकोरी चैनल सब्सक्राइब बटन क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे भूलिए जहाँद्वारा आप प्रतिदिन नुआ नुआ अपडेट पाइपर। समस्त कर्मचारी को नेशनल इंक्रीमेंट जो मिल आसला से गुरुत्वपूर्ण सरकारी ऑर्डर कर्मचारी याद्वारा पेंशन बेनिफिट जो अच्छी पेंशन से बढ़ तो से विषय आज आम संपूर्ण आलोचना करवा कौन अच्छे ऑर्डर रे। तो आसतु देखा आज संपूर्ण ऑर्डरटी ये आप देखिपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग तरफ 14 अक्टोबर गोटे चिठी आसी जो गोटे ऑफिस मेमोरेंडम अच्छी आप देखुए। तो ये अच्छी सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंक्रीमेंट सब्जेक्ट अच्छी ग्रांट ऑफ नेशनल इंक्रीमेंट जोटा कि 1 जुलाई 1 जनवरी टू द एम्प्लॉई हु रिटायर्ड जो मैंने कि रिटायर्ड कर सेंट्रल सर्विसेस रे 30 जून रिटायर्ड करथिबे किंतु तांकर इंक्रीमेंटा 1 जुलाई रे थिबो 31 डिसेंबर रे रिटायर्ड करथिबे किंतु तांकर इंक्रीमेंटा 1 जनवरी रे थिबो रेस्पेक्टिवली फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग देयर पेंशनर बेनिफिट। तो सही रिगार्डिंग अच्छी चिठीटी आम से चिठी विषय आज संपूर्ण आलोचना करिबा। The understanding is directed to say that in the term Rule 10 Central Civil Services जो रिवाइज पे रूल 2006 अनुसार जोटा कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर तरफ गोटे नोटिफिकेशन होता 29/8/2008 रे डेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट वाज मेड यूनिफॉर्म जोटा कि 1 जुलाई ऑफ एवरी ईयर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2006। इट वाज सब्सिक्वेंटली डिसाइडेड बाय जोटा कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज रिवाइज रूल 2016 नोटिफाइड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर भाइट नोटिफिकेशन 25/7/2016 देयर शाल बी 2 डेट फॉर ग्रांट ऑफ इंक्रीमेंट नेमली 1 जनवरी आ गोटे 1 जुलाई। तो से अनुसार जे देखा ऑनरेबल हाईकोर्ट मद्रास जोटा कि गोटे ऑर्डर देते 15/9/2017 जोटा कि पी आम्पेरुमा जे थे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तरफ allow grant of national increment to the petitioner on date of following date of his retirement from service for the purpose of calculate pensioner benefit जोटा पेंशन बेनिफिट कैलकुलेट करा गोटे मद्रास हाईकोर्ट तो गोटे ऑर्डर देते जजमेंट इन द केस ऑफ श्री पी आयप्रोमाल वाज इम्प्लीमेंटेड इन पर्सोनाल। तो फॉलोइंग ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट ट्रेनिंग तरफ रिसीव्ड ए नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द एम्प्लॉई हु सुपरिटेड जो मैंने कि 30 जून एवं 31 डिसेम्बर रिटायर्ड करते क्लेमिंग सिमिलर बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ कोर्ट केसेस हैव आल्सो बीन फाइल्ड बिफोर ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट द सब्जेक्ट मैटर। तो ये सब्जेक्ट नहीं विभिन्न जो कर्मचारी माने अछंती से माने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एवं ट्रिब्यूनल से माने केस करथिले। तो से देखा द इश्यू वाज एग्जामिन इन कंसल्टेशन विथ द नोडल अथॉरिटी कंसर्न एंड विथ ड्यू रिगार्ड टू द रेलिवेंट प्रोविजन इन फंडामेंटल रूल जो अच्छी व्हिच रेगुलेट ग्रांट ऑफ इंक्रीमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। इट इज pertinent to that fundamental rule 921A define pay as amount sanctioned to the government servant for a post held by substantively in officiating capacity to he is entitled by reason of his position in cadre. Fundamental Rule 17 provide that subject of any exception specifically made in this rule, an employee shall begin to draw the pay and allowances attached to his tenure of a post with effect from date which he assumes. The duty of post shall cease to draw the same as soon as he ceases to discharge दोज ड्यूटी। ताले फंडामेंटल रूल अनुसार कहूँ कि जो कर्मचारी जो पोस्ट अनुसार जी दरमा और अलाउंसेस मिलिया कथा मिलूँ। फर्दर जो फंडामेंटल रूल 24 स्टिपुलेट दैट एन इंक्रीमेंट मे बी विथहेल्ड फ्रॉम ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ हिज कंडक्ट हैज नॉट बीन गुड ऑफ हिज वर्क हैज नॉट बीन सैटिस्फैक्टरी। टू समराइज दिस रूल प्रोविजन फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ एन इंक्रीमेंट ऑफ डेट इट्स एक्यूरल an employee should be in service, should have rendered satisfactory work, should have displayed good conduct during the period of qualifying service। ता सहित फंडामेंटल रूल 24 कहूँ जदि जड़े कर्मचारी
ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟୋରୀ ସର୍ଭିସ୍ କରନ୍ତିନି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଆପ୍ରେଜାଲ୍ ଠିକ୍ ନଥାଏ ତ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ। ହାଉଏଭର ଅନରେବୁଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁଟାକି 11/4/2023 ଇନ୍ ସିଭିଲ୍ ଅପିଲ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ କେପିଟିସିଏଲ୍ ଭର୍ସେସ୍ ସିପି ମୁଣ୍ଡିନାମାନି ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ସ गोटे केस होता जो थी अफेल द ऑर्डर पास बाय डिवीजन बेंच ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक एंड बेंगलुरु इन रिट पिटिशन जोटा होता 2017 अलाउइंग ग्रांट ऑफ वन एनुअल इंक्रीमेंट which with the original writ petition earned on the last date of their service rendering service during the proceeding 1 year from the date of retirement with good behavior especially for the purpose of calculating the retired benefit. However, Union of India was not among the parties in the said case. तो सही अनुसार सब्सिक्वेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो थिला 19/5/2023 रे डिसमिस जोटा डिसमिस करथिले जो रेलवे ऑन द सब्जेक्ट मैटर विथ द ऑब्जर्वेशन दैट द अपील फाइल देयर इन आर स्क्वायरली कवर्ड बाय द ऑर्डर डेट 11/4/2023 रे रेलवे फाइल्ड ए मिसलेनियस एप्लिकेशन जोटा फाइल करथिले 2024 बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सीकिंग गाइडेंस क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग मोडालिटी टू द अडॉप्टेड फाइल इम्प्लीमेंटिंग इट्स ऑर्डर डेटेड 19/5/2023 जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रही ताकू इम्प्लीमेंट कराया व्हाइल हियरिंग द मैटर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दैट द लॉ काउंसिल फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया शैल एग्जामिन at the whether Union of India need to file a application dispose by judgment after due legal consultation of the director of the apex court. This department file a petition before Supreme Court जोटा कि 12/8/2024 रही seeking review of its order 11/4/2023 which is pending before the honorable Supreme Court रे एपर्यंत pending अछि. Meanwhile on जोटा कि 6/9/2024 while hearing filed by MAO Railway along with the several intervention application tagged therewith Honorable Supreme Court took note the pending petition filed by Union of India seeking review its order date 11/4/2023 in the matter while observing that the issue raised in the application required consideration insofar as date of applicable to the judgment जोटा कि to the third party is concerned honorable court issue following direction by the way of interim order to prevent any other further litigation and confusion. तो ये कौन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर गोटे कही द जजमेंट डेटेड जोटा 11/4/2023 रही विल बी गिवन इफेक्ट टू केस थर्ड पार्टीज फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट दैट इज द पेंशन बाय टेकिंग इनटू अकाउंट वन इंक्रीमेंट विल बी पेबल आफ्टर 1/5/2023 एनहांस पेंशन फॉर द पीरियड ऑफ 30/4/2023 विल नॉट बी पेड. से अनुसार फॉर द पर्सन हु फाइल्ड रिट पिटिशन एंड सक्सीडेड the direction given in this judgment will be operate as judicata accordingly and enhance pension by taking one increment should have paid. तो ये गोटे जो मैंने रिट पिटिशन फाइल करते जो कर्मचारी मैंने से पेंशन बेनिफिट मिल सेमती डायरेक्शन इन बी विल नॉट अप्लाई where judgment has not been attained finality and cases where appeal has been preferred its file is entertained by the appellate court. In case an retirement employee has filed any application for the intervention implement in civil appeal number जोटा गोटे होता any other writ petition and beneficial order has been passed, the enhanced pension by including one increment will be payable from the month of which the application for intervention was filed. तो ये कहुए जो कर्मचारी मैंने application writ petition फाइल करते से इंक्रीमेंट आउ पेंशन बेनिफिट मिल. This interim order will continue till further order of the court. However, no person who has already received an enhanced pension including arrear will be affected by the direction ACD. तो सही अनुसार ये देखिए the matter has been examined in consultation the Department of Expenditure Legal Affairs. It is advised that in pursuance of this order date 6/9/2024 the Honorable Supreme Court report above sanction may be taken to allow one increment 1st July 1st January to the central government employee who retired are जो मान कि रिटायरिंग ए डे बिफोर इट बिकेम ड्यू 30 जून आउ 31 डिसेम्बर 31 डिसेम्बर
have rendered the requisite qualification service as a date their superannuation satisfactory work and good conduct for calculating pension admissible to them as applicably and specifically mentioned in the order. Honorable Supreme Court grant the notional increment जोटा कि 1 January और 1 July shall be reckoned only for the purpose of calculating pension admissible or not for the purpose of calculating other pensioner benefit. तो केवल पेंशन बेनिफिट पाई एटा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर कैलकुलेट करने पे कुआई. It may be noted that these instructions are being issued in compliance with the interim order of date जोटा कि 6/9/2024 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट without prejudice to the legal of the Union of India in the matter without prejudice any change in the law of this regard. Further action taken shall be subject to the final outcome of review petition. ताले समस्त कर्मचारी जिते लागू हम के ना जो गोटे फाइनाल आउटकम आसो माननीय सुप्रीम कोर्ट को ठारू गोटे जो रिव्यू पिटिशन होता तापर जाकि व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी हियर बाय अपेक्स कोर्ट इन द वीक कमिंग 4/11/2024 अर्थात नवेम्बर मसरे एटा हियरिंग हम. तो फाइनाल आउटकम आइले जजमेंटर एटा समस्त कर्मचारी लागू हम. दिस इश्यू द कंकरेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जोटा कि लीगल अफेयर्स भाइड कंप्यूटर नंबर जो अनुसार 30/9/2024 तो से अनुसार ये देखिपे महेश कुमार जी अच्छा अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये क्या पठाई ऑल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट कंट्रोलर जनरल अकाउंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन विजिलेंस कमिशन प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट ता सहित ये दिखाई क्या गवर्नमेंट ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी अर्थात समस्त राज्य सरकार पाखक चिठी कराई. ये आप देखिए सेक्रेटरी नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइड ऑल मेंबर ऑफ स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल जेसीएम डिपार्टमेंट ऑफ काउंसिल जोटा कि समस्त पाखक स्टैंडर्ड लिस्ट अनुसार कॉपी फॉरवर्ड कराई. तो आज खबरटी धन्यवाद.